x into dou u by dou x plus z into dou u by dou z is equal to 2x z into u and y into dou u by dou y plus z into dou u by dou z is equal to 2xy z into u. So we should have to proceed or prove these two things. The first one is u is the function is clearly given. U is equal to e raised to x y z, f of x y by z to these two terms. So the solution of this problem इसमें एक और प्रूफ है, वो लास्ट में मैं डायरेक्टली प्रूफ करूंगा उस चीज को, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो लास्ट में कंफ्यूजन होगा कि ये डायरेक्टली कैसे आ गया. So one more proof is given, hence so that x into dou square u by dou z dou x is equal to y into dou square u by dou z into dou y. So the solution I'm going to start directly here. First of all, whatever the given things is given for the function. So the function u is equal to e raised to x y z into f of x y by z. These things are given. We have to differentiate this part with respect to x as well as with respect to y, and there are three variables are there in this function z. So we have to differentiate this function with respect to z also. So differentiating with respect to x, first of all, so dou u. Sir, voice is very low. So differentiating with respect to x, this part you will getting what with respect to x we have to differentiate. So we product rule, first into derivative of second plus second into derivative of first, or vice versa, second into derivative of first plus first into derivative of second. So we have to apply the same concept here. So I'm taking. हेलो हेलो सर, क्वेश्चन में एक्स वाई जेड आएगा सर, Yes, ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा. what e का power, what e का power x y z सर आएगा. क्वेश्चन में फर्स्ट में सर e रेस टू एक्स वाई जेड आएगा, आपने एक्स लिखा है. Where you are saying u is equal to e raised to x y z, e raised to x y z, function is clearly x y by z. So अभी तो कुछ किया नहीं है मैंने यहाँ पे. बरोबर है सर. No, कौन बोल रहा था कि क्या आएगा? I'm just asking, that is so that your doubt must be clear. सही है सर, सही है, राइट है सर. Okay, so we have to differentiate this function with respect to x. So f of xy
by z as it is, second as it is, into derivative of first I'm taking. So e raised to x y z as it is into derivative of this part with respect to x. So you will getting y into z plus. Now the first function as it is e raised to. Sir, you are not audible. पर वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो सर। सर हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है।
नेट चले गया था बट किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया. All of you have my numbers at your in our WhatsApp group, so you at least कोई तो इनिशिएटिव लेके मुझे बताना चाहिए ना कि मैं हूँ नहीं लेक्चर में. What you thought? We thought कि आप कॉल पे. नो वे डियर, आपको स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था तो एटलीस्ट यू शुड रिमाइंड मी. Please remember these things. If in any situation, if my screen is not visible या फिर मैं नहीं हूँ completely आपके इस मीट में, तो एटलीस्ट एनी वन ऑफ फ्रॉम योर साइड प्लीज टेक इनिशिएटिव एंड गिव मी अ कॉल. नहीं, व्हाट्सएप कॉल हो जाता बेटा, बिकॉज दिस इज आई एम इन कॉलेज. सो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो कॉलेज का कनेक्शन है ना. माय वाईफाई, माय व्हाट्सएप इज रनिंग विथ माय मोबाइल डाटा. सो प्लीज ध्यान में रखो. अदरवाइज मैं यहाँ पे कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ तो बाद में मैंने जस्ट पूछा कि डाउट है या नहीं, उसके लिए इधर आया मैं जब, तो दैट टाइम आई रियलाइज दैट इज के आई वाज लेफ्ट. Okay, anyway, so just see the derivative I taken with respect to x, with respect to y, with respect to z, and please let me know if there will be any doubt. Come on, fast. If anyone having any doubts, difficulties, or if any queries regarding the derivative with respect to x, with respect to y, and with respect to z, please let me know. So hope I'm considering there will be a no doubt, and proceeding with the next part, or whatever the condition is given. The condition is clearly given. We have to multiply dou u by dou x with x, dou u by dou z with z. Similarly, we have to multiply dou u by dou y with y variable. So one by one we have to perform here. So x into dou u by dou x plus z into dou u by dou z is equal to, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोनों पार्ट जो हमको दिया गया है यहाँ पे, x into dou u by dou x plus z into dou u by dou z. सो यही पार्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे. तो x into f of x y by z into e raised to x y z into y z plus e raised to x y z into f dash x y by z into y by z plus z into, so dou u by dou z, f of x y by z into e raised to x y z into x y plus e raised to x y z into f dash of x y by z into y by z. Sorry, y by z नहीं आएगा. This will becomes as it is minus xy by z square. So just see this part. We applied the whatever the condition is given in a question. The concept was given. We have to multiply
x with dou u by dou x. So same concept we applied here. Now moving further on the next step, x into dou u by dou x plus z into dou u by dou z, which is equal to. Now you can just observe this part. If you are going to observe, so this, if I multiply here x, so I will get what? F of xy by z into xyz into e raised to xyz. Similarly, when I have to multiply z here, I will get what? xyz into e raised to xy. मतलब xyz और f of xy by z, f of xy by, ये टू टाइम्स है आपके लिए यहाँ पे, ये टू टाइम्स हो जा रहा है आपके पास, ये एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड आपके पार्ट है पास है, मतलब ये दोनों वन टाइम्स प्लस वन टाइम दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स. सो आई हैव टू ऐड दिस टू टर्म्स. सो just see f of xy by z and f of xy by z, and similarly e z e raised to xyz and this xyz, similarly this z into xy. So it is again this part directly. अगर किसी को नहीं समझेगा तो definitely I will split this part or we have to multiply करने में ये पूरा लग जाएगा, सिर्फ x से सबको multiply होगा. So according to the same concept, or if you can take f of xy by z, f e raised to xy z e raised to xy z. So 2 into, because बीच में मिडल में प्लस साइन है, 2 into e raised to xy z into xyz into f of xy by z. ये तो हम लोग को इतना पार्ट मिल गया. नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं और चेक करते हैं x into this part, x into this part. So you can just see that or imagine this is xy by z हो जाएगा आपका पार्ट. This will becomes xy by z हो जाएगा. जैसे ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये तीनों टर्म्स में x मल्टीप्लाई होगा और तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है. So you just observe this xy by z. Similarly, when z is multiplied here, this square get cancelled. So z into this square get cancelled, so you will getting minus xy by z. और वो माइनस साइन अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो आई विल गेट माइनस ऑफ दिस पार्ट. तो ये सेकेंड पार्ट जो है वो दोनों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैंसलेशन चले जाता है. दिस पार्ट इज कैंसल विद दिस पार्ट जैसे ही हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो ये पार्ट हमको मिलता है. अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करके टर्म्स लिखोगे तो आपको एट द एंड रिजल्ट यही मिलेगा. एंड फाइनली विल गेटिंग व्हाट x into dou u by dou x plus z into dou u by dou z, which is equal to 2xy z. आपने अगर क्वेश्चन अगर देखा होगा तो क्वेश्चन में क्या क्लियरली गिवन है, u इज इक्वल टू e रेस टू एक्स वाई जेड इंटू एफ ऑफ एक्स वाई बाई जेड. तो e रेस टू एक्स वाई जेड इंटू एफ ऑफ एक्स वाई बाई जेड इज क्लियरली गिवन हियर. सो वी शुड राइट एज u दिस पार्ट, एंड दिस इज आवर फर्स्ट प्रूफ. ये हमारा पहला प्रूफ है यहाँ पे. x into dou u by dou x plus z into dou u by dou z is equal to 2xyz into u. Similarly, the second proof we can verify very easily. जस्ट हमको क्या करना है, सेम वे से हम लोग यहाँ पे जैसे x इंटू था तो उसी तरह y इंटू करोगे आप. सो y इंटू डो u by डो y plus z into डो u by डो z. So this will become y into f of x y by z into e raised to x y z into xz plus e raised to x y z into f dash x y by z into x by z plus z into f of
xy by z e raised to xyz xy plus e raised to xyz into f dash of xy by z into minus xy by z square. So again, the same concept we apply here. If we multiply these two parts, we'll getting about the similar concept. So y into dou u by dou y plus z into dou u by dou z, which is equal to. While multiplying these two parts, you will getting the same concept here. That is 2 into e raised to xyz into xyz f of xy by z, and while multiplying with y here, it will becomes xy by z, and this will becomes z square get cancelled, so you will getting minus xy by z only. So minus minus terms will get cancelled and you will getting the same proof जो हमको पूछा गया है, that is y into dou u by dou y plus z into dou u by dou z, which is equal to 2xyz into u, because this part is our function, that is u. So this is clearly given. Now the next proof we have to define here. Hope these two things are clear to everyone. Just see to it that if there will be any doubts, please let me know. I'm just giving you 1 or 2 minutes. So please एक बार देख लो अच्छी तरह से, अगर भी कोई doubt है तो please let me know. Okay, thank you. So proceeding with the next part. The next part is clearly given. Hence show that dou x into dou square u by dou z dou x is equal to y into dou square u by dou z into dou y. So the same things we have to apply here again. Now I'm just giving the equation 1 and 2 here. So this is my equation number 1 and this is equation number 2. जो हमारा वेरिफिकेशन है उसको मैंने इक्वेशंस दे दिए हैं. अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ both the side. So I'm just writing here with respect to z करेंगे. Differentiating equation 1. Differentiating equation 1 with respect to z, or equation 1 both the side partially with respect to z, with respect to z. So just see the equation number 1, which is at the above. X into dou u by dou x plus dou u by dou z is equal to 2xyz into u. So we have to differentiating this part. So x as it is, they differentiating this part with respect to z. So you will getting dou square u by dou z into dou x plus the next will becomes what? Second part to 0 हो जाएगा directly, because dou u by dou x you have to write as it is like dou u by dou x
and derivative of x with respect to z, it will becomes 0. लिखना है तो लिख दो. Plus constant है, directly you can take as a 0. Next part, this part we have to take, we have to differentiate this part again with respect to z, we have to differentiating. So z as it is into derivative of this part with respect to z. So you will get dou square u by dou z square plus then dou u by dou z as it is, and derivative of z with respect to z will becomes 1, which is equal to. Similarly, here we have to apply. You just see this part clearly. Xy is your constant term for this differentiation, but u, if you will observe this u part, so u is our main functions, and in u having variable x, y, z, all three variables. So we have to differentiate this part partially again. So I'm just differentiating this part. इसमें जो मेन डेरिवेटिव है आपका, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, ये आपके लिए कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पे ट्रीट हुआ है, लेकिन ये आपका यहाँ पे दोनों जो फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. So I'm just applying the similarly here. So 2xy as it is, and into derivative of this two parts with respect to z. So z into dou u by dou z plus u as it is, and derivative of z will becomes 1. Derivative of z will becomes 1. और ये हम लोग डेरिवेटिव यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट से सिर्फ लिख दे रहा हूँ मैं. सो x इंटू dou square u by dou x square dou z into dou x plus this part is 0. So z into dou square u by dou z square plus dou u by dou z is equal to, we have to multiply these two parts, they will getting this what, 2x y z into dou u by dou z plus 2x y into u. So this is my equation number 3. One more time I'm explaining this part, so please just see to it that properly. Differentiating equation number 1, both the side partially with respect to z. So x as it is, derivative of this part, already it is a derivative of u with respect to x. So differentiating this part again with respect to z, you will getting dou square u by dou z into dou x plus dou u by dou x as it is, and derivative of x with respect to z, you will getting properly 0 because x treated as a constant here, plus z as it is, derivative of this part with respect to z, again you will getting dou square u by dou z square plus dou u by dou z as it is, derivative of z with respect to 1 with respect to z, you will getting 1 is equal to, now 2xy is treated as a constant here, we have to differentiate with these two terms z and u. So in first part, z as it is, and derivative of u with respect to z, so z into dou u by dou z plus u as it is, and derivative of z with respect to z, you will getting 1. And after simplification, we got this equation number 3. Similarly, we have to perform here again differentiating or further differentiating both sides in equation number 2 with respect to z partially. अब इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है. सिमिलर वे
we have to differentiate this function. So y into differentiating with this part with respect to z, you will getting y into dou square u by dou z into dou u plus dou u by dou y and 0, because with respect to z आप y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे विल गेट 0। या ये स्टेप आप ओमिट भी कर सकते हो आपको चाहिए तो, प्लस z as it is into derivative of u with respect to z again, so you will getting dou square u by dou z square plus dou u by dou z, and derivative of z will becomes 1. If you want you can write is equal to, again I'm writing 2x y as it is, and this part as it is z into dou u by dou z plus u as it is, and derivative of z with respect to z will becomes 1. And after simplification you will getting y into u by dou z into dou u plus z into dou square u z square plus dou u by dou z is equal to 2xyz into dou u by dou z plus 2xy u. And this is my equation number 4. You can just observe equation number 3 and 4. Whatever we applied in equation number 3, similarly we got the equation number 4 by applying or differentiating the function with respect to z partially on both the side of equation number 2. Now from 1 and 2, if you will see or observe, the right hand side of both the equations are equal to xyz dou u by dou z 2xyu. So you will getting the same, sorry, 2xyz plus 2xyz dou u by dou x and 2xyu. Yes, just observe these two parts from one equation number 3 and 4. If you will observe, I can directly say that x into, or I'm just mentioning this part here or highlighting this part. आप अच्छी तरह से अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखोगे तो पहले तो ये पार्ट आप अच्छी तरह से देख लो. You just see this part with this part. So these two things are equal. Similarly, if you are going to observe this part here, then you will observe this part z into dou square u by dou z square, z into dou square u by dou z square, and last but not the least, this part dou u by dou z, dou u by dou z. So from equation 1 and 2, I can compute that. So from equation 3 and 4, we can say that x into dou square u dou z dou x is equal to, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना तो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो डायरेक्टली कि थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, ये दोनों को इक्वल लिख सकते हैं. सो उस जगह पे आप लिख सकते हो x dou square u by dou z dou x plus z into dou square u by dou z square plus dou u dou z, which is equal to y into dou square u by dou z into dou u plus z into dou square u
by dou z square plus dou u by dou z. Now then you can realize this part directly जो मैंने highlight किया है तो वो equal है इसलिए direct cancellation part आप cancel कर सकते हो इस this part is cancel this part, and at last you can say that the x into dou square u by dou z into dou x, which is equal to y into dou square u by dou z into dou u. And this is our proof is given in a question clearly, that is hence prove that or hence show that x into dou square u by dou z dou x is equal to y into dou square u by dou z into dou y dou u. So this was our proof. Yes, बोलो बेटा. स्क्वायर वी बाय डो स्क्वायर जेड इंटू डो वाई आएगा ना, आपने डो यू लिखा है कहाँ पे? Yeah, this part will लास्ट में। becomes it. Yeah, this will becomes y as it is. Why? Because the with respect to equation number 2, if you will observe, that is dou u by dou y. Yes. Thank you for informing. Okay, anyone having any doubts regarding this problem? See, ये problem में हमने किया क्या exactly? सिर्फ differentiation किया है, partial derivative ही सिर्फ apply किया है. कोई ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, कोई a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला है, या अल्जेब्रिक expansion है या factorization है, nothing more, no, not at all. We just applied the partial derivative of all the function. Here there are three variables, so we applied three variables differentiation with partially. Like first we differentiated with respect to x. That time we treated y and z as a constant. Similarly, while treating y and z or differentiating y and z partially, we treated x and y constant respectively, or we just applied the partial derivative both the sides simultaneously. So this is exactly the partial derivative which you learn here. Now anyone having any doubts, so please let me know. Just wait for 1 minute.
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। Sir, your mic is muted. होल्ड करो भाई सबको वरना बोलेंगे फिर। Yeah, so I'm just writing a problem for your homework purpose. मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा था आपको, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लिख रहा था यहाँ पे। ओके, सो डो बाय डो एक्स सो दिस इज एग्जैक्टली योर प्रॉब्लम। इसमें क्या करना है, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट, द गिवन क्वेश्चन इज इफ u is equal to 1 minus 2xy plus y, then we have to prove whatever the condition or whatever the proof asked in a question. So first we have to differentiate the function properly. So differentiation करना important है हमारे लिए ये चीज में। Without differentiation you are not supposed to solve this problem. So just try this problem और उसके बाद आप लोग के लिए होमवर्क घर पे ट्राई कर लेना सब लोग ये प्रॉब्लम। So just note down. So next meeting, I think we have a Monday lecture. That time I will ask about this numerical. थोड़ा सा यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करके सॉल्व करना है। डायरेक्ट डेरिवेटिव करना स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा little bit. So just apply it and solve. So coming Monday, we'll try to attempt this more. One more numerical I'm giving homework for a practice to you. Third one. If z is equal to x into log x plus r minus r, where r square is equal to x square plus y square, prove that dou square z by dou x square plus dou square z by dou y square is equal to 1 by x plus r, comma dou square z by dou x cube is equal to minus x by r cube. So ये भी एक प्रॉब्लम है, आपके लिए होमवर्क है। थर्ड वाला हुआ ठीक नहीं हुआ ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मैं सॉल्व ही करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट मंडे लेक्चर में। ट्राई करो, देखो आता है या नहीं जमता। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिवर्सिटी में जब भी अगर थ्योरेटिकल एग्जाम आपका होता है और ये जो भी अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं में आपके फिजिकली एग्जाम आपको देने रहेंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। या जो आज हमने सॉल्व किया न्यूमेरिकल वो भी 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स ही हमने सॉल्व किए हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। सो वाइल डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आर स्क्वायर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आर स्क्वायर इज गिवन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के रखना जरूरी है। व्हाट विच डेरिवेटिव, डो आर बाय डो एक्स हमारे लिए क्या होएगा, तो you just observe that is dou r by dou x क्या हो जाएगा आपका, if you are going to take the derivative of this part, differentiation इसका अगर करोगे आप, I'm just explaining this problem, सिर्फ explain कर रहा हूँ, solve नहीं कर रहा हूँ। So r square is equal to x square plus y square, so becomes 2 dou r by x, अगर पहले आप calculate करते हो तो you will getting 2x. Similarly, again if you are calculating 2 dou r by dou, then it becomes 2. Similarly, 2 get cancelled, so dou r by dou x is equal to x by r. Similarly, dou r by dou y, which is equal to y by r. So please remember this thing, for r square is clearly given x square plus. Telling you this part is because while differentiating this part partially, जैसे ये जब इस part को आप partially differentiate करोगे, तो एक थोड़ा सा एक स्टेप में खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। आपके पास z इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x प्लस आर माइनस आर इज गिवन, minus r is given. So while differentiating this part partially with respect to x pehla, because see you can you will observe this part, or you can observe these things, dou square z by dou x square, since we have to differentiating this function with respect to x first, so dou z by dou x, इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे यहाँ पे, so what you have to apply, that is again the product concept rule. So first into derivative of second, second into derivative of first, you can just observe this part, u into v rule जो आप लोग अप्लाई करते थे डेरिवेटिव में, प्रोडक्ट रूल, similar way, similarly we have to apply here. So x as it is into derivative of log of x plus r will becomes what, 1 upon x plus r, 1 upon x plus r. फिर into डेरिवेटिव जब होगा इस पार्ट का, तो x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, और r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो dou r बाय dou x, dou r बाय dou x प्लस, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ले लिया, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज, फॉर log ऑफ x प्लस r एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इट विल बिकम्स 1. तो ये पार्ट आपका हो जाता है पूरा, यहाँ पे बचता है r, तो माइनस dou r बाय dou x, dou r बाय dou x. अब आपको ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जो आपको ये दिया गया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आपने कैलकुलेट किया है डो आर बाय डो एक्स एंड डो आर बाय डो वाई, वो वैल्यू यहाँ पे फिल करना, सिंप्लीफाई करना, और फिर से एक डेरिवेटिव आपको लेना रहेगा, बिकॉज डो स्क्वायर जेड बाय डो एक्स स्क्वायर है, इवन एक्स वाले पार्ट का तो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब 3 टाइम्स करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको जाना है। तो प्रॉपरली सॉल्व करो, देखो आता है रिजल्ट तो ठीक, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में Monday will meet, so that time we will definitely tackle this problem. Now if anyone having any doubts, whatever we solved a question, और जो होमवर्क दिया है उसको भी प्रॉपरली अच्छे से देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, वो भी अगर नहीं आया तो दोनों न्यूमेरिकल लिख के रखना, सॉल्व करना, कोशिश करना, बिकॉज ट्राई करना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे वो भी आपको सॉल्व करके ही उसका आंसर मिलेगा, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं पता चलेगा. सो प्लीज स्टार्ट solving the problems of mathematics, because without solving problems, without understanding problems, you are not supposed to tackle the subject of mathematics. So please go through with your daily day-to-day solution of, because in a week I think 4 lecture of mathematics are going on, 4 लेक्चर्स हो रहे हैं आपके मैथ्स के पूरे वीक में. सो अकॉर्डिंग टू
the concept of this part, you should give at least every day 1 hour, or at least you have to solve one or two problem of mathematics every day. हर दिन आप ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, अदरवाइज इशू होंगे. अटेंडेंस सबका हो गया है, so I can just see this part. Just wait, don't left. Till now only 61 responses I got. Attendance link, please. Please fill this attendance link.